जितनी भी चीज़ें हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिमिट्स सी मैथ एस एस स्ट्रीम और वेक्टर्स, ये सारे हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं। हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो मेन पर्पस उसका ये है कि हम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बनाएं। सबसे पहले जैसे हमने इधर एक फंक्शन बनाया वॉइड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सेम एज पावर का बनाया, स्क्वायर रूट का बनाया, क्यूब रूट का बनाया और एंड तक हमने कहाँ तक बनाया, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, इनपुट सेक भी बनाया। अब उसके बाद यहाँ से जो इंट मेन स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेन मेथड। सही है, मेन मेथड में हमने क्या है, स्ट्रिंग को रिपीट दिया हुआ है, मतलब ये जो इसकी ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली इसको रिपीट में रखा हुआ है क्योंकि हम इसको रीडू भी कर सकते हैं कि हम कुछ और सेलेक्ट करना चाहे। फर्स्ट को हमने पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन भी सेलेक्ट किए, 1 किया या फिर हमने 2 किया, यहाँ पे हम 2 दबाएंगे, क्यूब रूट किया तो वो बोलेगा क्यूब रूट की वैल्यू बता दो, वो क्यूब रूट में चेंज कर देगा। फिर सब के सी आउट दिए हुए, जैसे हमारे पास यहाँ पे सी आउट 1 जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाएगा, सेकंड क्यूब रूट, थर्ड स्क्वायर रूट, इस तरह अप टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ये सारे सी आउट्स हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम वैल्यू को शो करा सके कि वो कर रही क्या है। उसके बाद हमने इंट सेलेक्ट एक फंक्शन वो बनाया, वेरिएबल बनाया जिसमें हमने फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 50, आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस, मतलब एक लूप है वो लेस देन 50 है, मतलब वो 0 to 49 चलेगा और वो तब तक ऐड होगा जब तक उसकी वैल्यू 49 नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफ़ की कंडीशंस लगाई हुई, अगर हमने 1 सेलेक्ट किया अर्थमेटिक ऑपरेशन इस तरह सेम एज हमारे पास 14 तक है, डिग्री टू रेडियन हम जो भी सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी आउट है, डू यू वांट टू यूज़ कैलकुलेटर अगेन, प्रेस यस इफ़ सो। अगर आप कैलकुलेटर वापसी यूज़ करना चाहते हो तो हम इधर क्या लिख देंगे, सिंपली यस लिख देंगे जो हम वापसी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इस प्रोग्राम को हम लोग जितनी दफ़ा यस लिखेंगे उतनी दफ़ा रिपीट पे रख देंगे। कितनी दफ़ा इंसान फ़र्ज़ करो पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया, मर्ज़ी उसकी वापसी ये करना चाहे सेलेक्ट कर सकता है। वाइल रिपीट यस, रिपीट करना है, ख़त्म, रिटर्न कर दिया हमने वैल्यू को 0। यहाँ तक क्या था, हमारे पास कैलकुलेटर का एक स्ट्रक्चर था। After the main function, here we have defined all those functions which were declared at the starting of the code. The very first is the input check function. This function checks whether the user's input is a numeric value or not, and if it isn't a numeric value, it will show an error message and it will clear its input and will ignore all the characters that are left in the streamline. And if it is a numeric value, it will simply just return that numeric value to the place where this function is called. The next function is the arithmetic operation. This function takes string as an input and extracts all the numeric values that are present in the string and store these numeric values in the vectors, and afterwards it will check that which kind of operator is used. Okay, if a subtraction operator was used, then all these values will be subtracted, and if a plus operator was to be found in the string, then addition operations would be applied on all those values, and if a multiplication operator was found in the string, then all the values will be multiplied, and at the last, if a division operator was to be found in the string, then all the values will be divided. And of course, elsewise, if neither of the operator was used, it will show just a message that no operator was used in the string. So moving forward, we have used a function for cos value, void cos value. Now we will see how many cos value did the user want to calculate. For this purpose, we have used a for loop. Now we will see that the user want their answer in degrees or radian. So we have used do while loop for this purpose. So this changing of values from degrees to radian start from do while loop. Within the loop, it displays a message asking users to input whether their values are in degrees or in radian by just entering R or D. Now you can see we have used conditions in do while loop. If type is D, it means user enters values in degrees. It converts each degree value to radian by using degree to radian function. Here is the degree to radian function. It then calculates the value and the loop will terminate using the break statement.
But if type is R, it means the user have entered the values in radians, so it will directly calculate and displays the values. But now there is a while loop. If user enters neither R or D, so it will directly displays an error. So this was all about cos function. Now moving forward towards sine function. It is also same. First we will see how many numbers do the user want to calculate, and again we have used a for loop. Now we will see that the user want their values in degrees or radian. We again have used do while loop. We have conditions in do loop. If type is D, so it will convert the degrees into radian by using degree to radian function. But if type is R, so it will directly give you the answer. But if user enters neither R or D, so it will directly give the error. So now we have another function for tangent value, void tangent value. Again we will see how many numbers did the user want to calculate. Again we have used for loop, then again do while loop. We have conditions in do while loop. If type is D, so it will see the condition. If type is R, it will also see the condition. But if user did not type any of R or D, so it will give us error. First of all, there is an input check function in all functions which ensures valid numeric input by continuously prompting the user until a valid number is entered. Secondly, there is a natural log functions which prompts the user to enter a value, check its validity using input check, and then calculates and display the natural logarithm of the entered value using the log function. Thirdly, I have a base 10 log function, which is similar to natural log function, but it calculates and display the base 10 logarithm using the log 10 function. Fourth, I have pi value, simply displays the value of pi, a pre-defined constant. Then there is a square root function, which prompts the user for a number, check its validity, then calculates and displays square root using the square root function. Then we have cube root function, which is similar to square root, but it calculates and display the cube root using the cube root function. Uh, then we have power function, which takes a base value and a power from the user, then calculates and display the result using a loop and multiplication. Then there is a factorial function which prompts the user for a number, calculates its factorial using a loop and display the result. Then we have percentage function which takes two values from the user, calculates the percentage and display the result. In last, we have radian to degree function, which convert a user input value in radians to degree using the conversion formula and display the result.